Preet, thank you very much for getting us those details. We're moving on now. The Congress party has responded to the announcement today made on Agnipath providing an opportunity to the youth to serve the nation. The Congress party, in fact, has mocked the Agniveer scheme. Congress party is alleging that people are being misled. Congress mocks the Agniveer scheme, which is being seen as a reform, which will change the way, in fact, individuals are inducted into the armed forces. Agniveer scheme is being seen as an opportunity for the youth of the nation to serve the nation for both short duration and the long duration. Congress party's first reaction is that this is misleading. क्या यही अच्छे दिन है कि आप युवाओं को फुल टाइम जॉब तो दे नहीं पाए, अब पार्ट टाइम जॉब देने जा रहे हैं और एक तरफ तो आप इनकी सरहदों पर भेजकर इनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ 4 साल पूरे हो जाने पर ये लोग फिर अपनी जॉब के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार ढूंढने फिर से कतारों में खड़े होंगे, दफ्तरों के बाहर खड़े होंगे। क्या यही नया आपका भारत है? क्या ये जी प्रधानमंत्री जी, क्या यही अच्छे दिन है कि आप युवाओं को फुल टाइम जॉब तो दे नहीं पाए, अब पार्ट टाइम जॉब देने जा रहे हैं और एक तरफ तो आप इनकी सरहदों पर भेजकर इनकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ 4 साल पूरे हो जाने पर ये लोग फिर अपनी जॉब के लिए, बेरोजगारी के लिए, रोजगार ढूंढने फिर से कतारों में खड़े होंगे, दफ्तरों के बाहर खड़े होंगे। क्या यही नया आपका भारत? Right, well, the team says 25% of the recruits would be retained. Let's go across to Pradeep Datta is joining us with more details. The first reaction that has come in from the Congress party says it's misleading and that the government is providing part-time jobs. So the Agniveer scheme is being mocked by the Congress party. That's really a problem with the Congress party because this has become their standard operation procedure to criticize each and every policy of Prime Minister Narendra Modi. I think they have failed to understand what for this policy had been made. When they're talking about Ashwani Handa, one, they are going to have a disciplined life. Second, they are trying to inculcate the spirit of patriotism among youngsters. Third, they are giving them employment. And fourth, it's about the youngsters who will be donning uniform because many of them want to pursue their dream and they do not get a chance to become officers in Army, Navy or Air Force. So that way it will be a big chance for them because there are many of the youngsters we have been interacting with here in Jammu and Kashmir since morning. All of them are quite happy and they feel that this will give them a chance to uniform. Second, this will give them a chance to serve motherland India. Third, it will be a chance for them to see the tricolor remains fluttering. But Congress party once again is trying to, in fact, belittle this effort of Prime Minister Narendra Modi. They are saying that this is a part-time job. I think they have not understood what actually the Israel had been doing. In Israel, they had been providing armed forces training to each and every person because they are trying to inculcate the spirit of nationalism and patriotism among youngsters and also to improve the security. See, these youngsters, the 25% of them will be permanently recruited afterwards also because there are many youngsters, they don't want to do anything else because this will provide them an opportunity to join other things also once they complete their 4 years period. But Congress people will not be able to see all these things, and so the controversial statement coming from his side, he's saying that you are sending them to the borders to get them killed. What a kind of a bizarre statement, an insensitive statement Pradeep, given stay by on with somebody. Us. We have Shahzad Poonawal of the BJP joining us in the broadcast. Shahzad, your response to this first reaction coming in from the Congress mocking the scheme, saying this is misleading, the government is giving part-time jobs. Congress party is only expert in being a bayan veer and they are only expert in siding with Pakistan, be it on Pulwama, be it on surgical strike, be it on Balakot airstrike. And therefore, today when a historic decision has been taken to modernize the armed forces, to give the armed forces a youth profile, to ensure optimal balance between experience and youth, and to ensure that the Indian Armed Forces, which in the last few years under CDS scheme, post-creation, under the other things, steps that have been taken to modernize the forces, is becoming more and more equipped to deal with the challenges. Today, Congress party is once again mocking this. This is because Congress party always mocked our armed forces. You remember Rahul Gandhi and the entire Congress party had questioned surgical strikes, that demanded proof. They had questioned Balakot airstrike. They had questioned the bravery of our forces in Galwan. And today, once again, they're questioning the bravery of our armed forces. And therefore, this is the Congress party, which is always against the armed forces of India. Even on Rahul Gandhi goes and compares Indian armed forces with Ukraine.
So this is the Right. mindset. Shehzad, I request you to stay on with us. We have Udit Raj of the Congress Party on the broadcast. Udit Raj, Shehzad Poonawalla says Congress Party is Bayanveer, does not understand facts, and in fact, it's not the scheme but the party which is misleading people. Please respond. I think the Modi government is hell-bent upon to lease out everything to the private sector, and also jobs are either on contractual basis. Lot of jobs have been thrown to contractual, on contractual basis, and then lateral entry, and then of course this. And this is the fact कि ये जॉब दे नहीं पा रहे, और जब प्राइवेटाइज कर देंगे तो जॉब क्या होगा। तो उदित राज जी, ये जो हम अग्निवीर स्कीम की बात कर रहे हैं, अगर 4 साल के बाद उनको रिटेन नहीं भी किया गया तब भी 10 लाख रुपया टैक्स फ्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा उनकी सर्विस के लिए, और अगर वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, स्किल डेवलपमेंट भी होगा। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है? प्लस मोर देन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। परमानेंट जिनका सर्विस 4 साल ले लिया है, उनका एक्सपर्टीज मिल गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उनकी सर्विसेज अवेल आगे भी होनी चाहिए। एक कंट्री के सिक्योरिटी सेफ्टी की बात है और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है। अच्छा, एक जवाब ले लेते हैं शहजाद पूनावाला से। शहजाद पूनावाला, उदित राज कह रहे हैं कि आप परमानेंट जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, तो ये आपकी स्कीम है कि ये भी बता दिया जाए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया ताकि आप पार्ट टाइम जॉब्स दे दें? ये सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात है। देखिए, उदित राज जी की समस्या ये है कि उनके लिए जो है हर कदम जो सरकार उठाती है देश को सशक्त करने के लिए, आर्म फोर्सेस को सशक्त करने के लिए, उन्हें उसमें कोई ना कोई खोट नजर आती है। मैं उदित राज जी को पूछना चाहता हूँ, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, राजस्थान में 20% बेरोजगारी है, उसको पहले दूर कर दीजिए। और जहां तक आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, भारत के सैनिकों को और जो भारत के लिए जो अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनको इस प्रकार से अपमानित करने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। क्या ये कहना चाहते हैं कि आज जो युवा जो राष्ट्र हित की भावना से ओतप्रोत होकर भारत की सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में, वो नाकाबिल है, उनके ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत की सेना पर सवाल उठाना और भारत की सेना में जो सेवा देंगे उन पर सवाल उठाना, ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। पूरी दुनिया की अगर फोर्सेस को देखा जाए तो वहां पर 2 से लेकर 8 साल की कमीशन होती है। अगर भारत में वही चीज अपनाई जाती है, मॉडर्नाइज किया जाता है, तो ये वो लोग हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं देते थे भारत की सेना को। ये वो लोग हैं जो रफाल से लेकर बाकी चीजों में रोड़ा अटकाते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल डिफेंस डील में दलाली खाई है। और आज जब मॉडर्नाइजेशन की बात होती है, यूथ प्रोफाइल देने की बात होती है, तो ये लोग फिर से रोड़ा अटका रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि किसके इशारे पर है ये? कौन से पाकिस्तान के इशारे पर है? कौन से देश, दुश्मन देश के इशारे पर है कि भारत के सेना के मनोबल को कमजोर किया जा रहा है? ऑल राइट, शहजाद पूनावाला एंड उदित राज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन द ब्रॉडकास्ट।